Students, first of all, you know that the test series is beginning, or the first paper of the test series is mathematics. So I will discuss this question paper of set A in brief for you people. All the important questions which you may find a little difficult will be discussed. To begin with, I'll take maths set A question number 2. Now here the question says that two towers of height h1 and h2 subtend angles of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of the line segment joining their feet. Now these are two towers, as you can see over here, height h1 and h2, and their feet are joined by line segment AB. Now I'll read the question once again. Two towers of height h1 and h2 subtend angles 60 degree and 30 degree. Here you can see 60 degree and 30 degree, where at the midpoint, M is the midpoint of the line segment joining their feet. So M is the midpoint of AB, and we have been told to find h1 is to h2, as you can see over here. Now how to tackle this sum? Here you need to find the ratio of h1 and h2. So you must see where the relation is there which can relate both h1 and h2. Now I can see that M has been given as the midpoint of AB, and this will be the helping hand for me. For me, I can say that AM is equal to BM, that is given. So when I go to the solution, I will first write that AM is equal to BM. This is given. And now if you look at this triangle and this triangle, let's name them as say C and D, these points. Now from this triangle you can see that H1 and AM, for 60 degree, H1 is the opposite side and AM is the adjacent side. And opposite and adjacent sides, they are parts of the trigonometric ratio called tan. So I can say that tan 60 is equal to H1 upon AM. The value of tan 60 is root 3. So root 3 is H1 upon AM. From here I get that AM is equal to H1 upon root 3. This way I can go. Then in this triangle I can see that I can similarly apply tan 30 degree is equal to H2 upon BM. Here tan 30 means 1 by root 3 is H2 upon BM, and from here I find BM is equal to root 3 multiplied by H2. If this I take as number 1 and this I take as number 2, now I know that AM is equal to BM. Here I have AM, here I have BM, and using that AM is equal to BM, which is given, I can write H1 upon root 3 in place of AM, and in place of BM I can write root 3 H2 upon 1. Now I need to find h1 by h2, so I can transpose h2 over here, it will become h1 by h2, and I will transpose root 3 to this point. So here I get h1 upon h2 is equal to root 3 is 3 upon 1. This is the final answer. Question number 7. Now this question says, question number 7 says, if d1, d2 is greater than d1 is given. So this is the bigger circle, so its diameter is d2. This radius will be obviously d2 by 2, and d1 is the radius of the smaller circle, so this is that, and it will be, radius will be d1 by 2. As you know, the radius is the half of the diameter. It is given that d1 and d2 be the diameters of two concentric circles and c be the length of the chord. This is the chord AB, its length is C. You know students that the perpendicular from center to the chord bisects the chord, so this length will become C by 2 as this whole length is given as C. Now we have been told to prove this. Now this can be proved in a very simple manner. Here you can see this OLB is a right triangle, and here these three sides are known to you in terms of variables, and they are the parts of the triangle where Pythagoras theorem can be applied. So if I apply the Pythagoras theorem,
by Pythagoras theorem, I can say that d2 by 2 का whole square is equal to d1 upon 2 whole square plus c upon 2 whole square. Now if you go for the whole square, here I get d2 square by 4 equal to d1 square by 4 plus c square by 4, and if we multiply by 4 we get multiplying by 4, all the 4 get cancelled, we get d2 square equal to d1 square plus c square. This is the proof that we were looking for. Let's take question number 14. Now in this question is given the angles of elevation of the top of a tower. Here is the tower AB, इसका top A है, इसके angles of elevation बने हैं from 2 points at a distance A and B from the base. इसके base से ये A distance पे है और ये B distance पे है, और बोला है in the same straight line with it, इसके साथ ये दोनों same straight line पर है. The angles with it are complementary. ये जो दो angles बन रहे हैं ये complementary है, मतलब अगर ये 40 होता तो ये 50 होता. Complementary angle का मतलब होता है दोनों angle का total 90 होना चाहिए. तो इसको हमने थीटा लिया तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. अब अपने को यहाँ प्रूव करने को बोला है द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी. हाइट को h लिया गया, तो जो टू प्रूफ वाला पार्ट है उसमें हम प्रूव कर सकते हैं h इज इक्वल टू रूट ए बी. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें तो a और b यहाँ है और ये है h. तो अपने को देखना है कि h, a और b को एक साथ कैसे लाना है. वो रूट वगैरह जो है वो अपने आप आ जाता है, उसका टेंशन लेना नहीं पड़ता ना. हमको यहाँ दिख रहा है कि a और h इस ट्रायंगल में है और b और h इस ट्रायंगल में है. अब ये दोनों इस एंगल के साथ कैसे एसोसिएटेड है ये अपन देखते हैं. इस ट्रायंगल में थीटा का ऑपोजिट साइड h है और एडजेसेंट साइड a है, मतलब tan लगेगा. तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC tan theta is equal to h by a. ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, इसको हमने नंबर 1 ले लिया. और इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD इसका tan लेते हैं. tan 90 minus theta is equal to h upon b. Now tan 90 minus theta आपको पता है थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे तो tan 90 minus theta हो जाएगा cot theta is h by b. अब इसको भी हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा. इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, इसका tan करेंगे cot का. आपको पता है tan जो है cot का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज b upon h. इसको हम लेते हैं नंबर 2. अब इसको ऐसा क्यों किया गया, जो प्रूफ करने वाला पार्ट है उसमें आप देख रहे हो उसमें ना तो tan है ना थीटा है. मतलब है कि हमको सिस्टम से tan थीटा को गायब करना पड़ेगा. इसलिए हमको यहाँ tan थीटा h by a मिला, यहाँ tan थीटा b by h मिला. अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा. तो देयरफॉर आई कैन राइट नाउ फ्रॉम 1 and 2 I can say h by a is equal to b by h. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा h square equal to ab. Therefore h is equal to under root of. Hence जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. The question number 70. Now in question number 70 what is given? Let's first read out. A cylindrical pipe has inner diameter of 4 cm and water flows through it at the rate of 20 meters per minute. Here you can see this diagram. Cylindrical pipe, diameter 4 cm, so radius becomes 2 cm, and the rate of flow of water, rate is given as 20 meter per minute as in the question. Now it is said, how long would it take to fill a conical tank? How long means time. Time taken has been required for what? To fill this conical tank. Here I have represented in the form of a cone whose diameter of base is 80 cm, so radius will become 40 cm,
and depth is 72. So depth means the height, and that is 72 centimeter. So students, the overall question says that this pipe is taking water and filling it into the cone. Now how much time is required to fill this cone completely? Now here you must take into consideration the fact that the volume of water taken by the pipe in say x minutes will be equal to volume of the water contained in the cone. So if I want to find time taken, I'll say let time taken be x minutes. Now why did I take minutes? Here you must understand that rate is given in meter per minute. Therefore, the time must be taken in minutes. Had it been second, you would have taken seconds. Had it been hours, you would have taken hours. So just be careful, be very aware about the fact that the unit of time should be same in both the cases. Now students, we have the consideration that volume of water taken by the pipe in x minutes will be equal to volume of water filled in the cone. Now using this concept we can find out the value of x. Now volume of water taken by the pipe, so pipe, the shape of the pipe is cylinder, so we take the volume of cylinder. Here you can see the dimensions are represented as small r, okay, and its height are represented by small h. Now here r and h, the formula will be pi r square h. That is equal to volume of water filled in the cone. For cone, the formula is 1 by 3 pi r square h. For this r I have taken as capital R and h also in capital. So here the formula is 1 by 3 pi capital R square capital H. Here we can see that pi gets cancelled. Now which values do you know? We know the value of small r, we know the value of capital R, we know the value of capital H. What do we need? We need the value of x. Now x is time, and here you can see small h we need to find the volume of this particular part. So small h means height, and height is actually a length. Length is a distance, and distance means speed into time. Here rate, that is given as 20 meter per minute, is the speed, and time is x. So if we want to find the height, we can multiply rate into time, that is 20 into x. This will come as 20x. But what will be the unit? Here you can see rate has meter, so this one will have the unit as meter. Now if I want to put the values of, over there, small r in centimeter, capital R in centimeter, capital H in centimeter, so small h must also be in centimeter, but we have it in terms of meter. Now we will convert this into centimeter. You know 1 meter is 100 centimeter, so 20x meter will be 20x multiplied by 100, that is 2000 x centimeter. Now students, if I put the value of small r, small h, capital H, I get the value of x, because x is a part of small h. So let's put the value. It's 2 square, means 2 into 2. Small h is 2000x, so let's put 2000x is 1 by 3 into capital R square. Capital R is 40, so we put 40 square, and capital H is 72. Let's put the value 72. Now you know how to cancel. If we go for cancellation, let's see what can we do. Here 2 zeros get cancelled with these 2 zeros. Then 2 to the 4, this 4 gets cancelled. Then 3 gets cancelled. 3 can cancel 72. 3 into 2 6. 3 into 4 12. Then we have this 20 over here. 4 into 1. 4 into 5. You can see everything else has been cancelled except this x, and 5 is over here and 24 over here. So I can say x is equal to 24 by 5. But what will be the unit of x? X is time taken, and it is in minutes, so it will be 24 by 5 minutes. Therefore I can say that the time taken
is equal to 24/5 minutes, which can be converted into decimal as and when required by you. So this is the question number 17 for you. Let's take question number 19 now. It's given a sphere of diameter 6 cm is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. Let's say this is the cylindrical vessel and it is partly filled with water. Some water is there. Now a sphere of diameter 6 cm is dropped in it. This is a sphere, diameter 6, so radius is 3. This is dropped in the water. So the water was filled till here. Now the water rose. पानी यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक आ गया. Okay. और हो क्या रहा है? The diameter of the cylindrical vessel is 12 cm. Diameter of cylinder is 12. Radius will be 6. Is given. Now, if the sphere is exactly half submerged in water, as you can see by this line, dotted line, the sphere is half submerged in water. आधा डूबा हुआ है पानी में. Okay. By how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? तो पानी का लेवल सिलेंडर में कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर पानी का लेवल जो बढ़ रहा है उसको हम ले लेते हैं ऐसा. Let the rise in level of water in the cylinder be h centimeter. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हाइट इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है स्फीयर की वजह से. लेकिन स्फीयर का पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ नहीं है पानी में. स्फीयर का सिर्फ आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, हाफ सबमर्ज्ड. इट्स क्लियरली गिवन. तो कैन आई से दैट ये जो पानी जो बड़ा है, जो लेवल बड़ा है, वो बड़ा है इसकी वजह से, स्फीयर की वजह से. तो इन अ वे आई कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर in the cylinder for height h centimeter will be equal to half the volume of sphere. अब इसको समझने की कोशिश करो. पानी इतना था, इस लेवल में था, से यहां तक पानी भरा हुआ था. अब पानी का लेवल इतना बढ़ गया, से ये h है, ये डिस्टेंस, ये जो हाइट है वो h है. नाउ ये जो लेवल बढ़ रहा है इसके किसकी वजह से बढ़ा? जो इसके अंदर गया. और इसके अंदर गया क्या? स्फीयर. स्फीयर भी पूरा डूबा हुआ नहीं है, आधा डूबा हुआ है. तो ये आधा जो स्फीयर डूबा है, आधा जो बचा हुआ है, या फिर ऐसा कहें कि आधा जो डूबा हुआ है, ये किसकी वजह से डूबा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो हाइट ऑफ वाटर है वो बढ़ा. तो ये जो हाइट ऑफ वाटर जो बढ़ रहा है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के हाफ वॉल्यूम के बराबर होगा. दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर फॉर हाइट h, उसका रेडियस 6 है, तो पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाफ द स्फीयर, माने हाफ इनटू 4/3 पाई r क्यूब. इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाता है. बाकी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं. कैपिटल R 6 है तो 6 into 6 बिकॉज r स्क्वायर इंटू h, ये अपन काट सकते हैं. तो ये 2/3 इंटू r क्यूब, स्मॉल r 3 है तो 3 into 3. अब एक 3 कट जाता है. 3 into 2, ये 2 भी कट जाता है. 3 1s are 3 2s are, तो वहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है. और यहाँ पे h के साथ 2 है, so therefore h is equal to 1/2 centimeter and I can write this as 0.5 centimeter. So the increase in height of water in the cylinder will be equal to 0.5 centimeter. The one very important sum, 12.3c classwork का question number 1. Now इस sum में आपको क्या दिया है, ये फिगर के फॉर्म में आपके सामने है. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्या बोला है? The given figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. ये एक सेमीसर्कुलर पार्ट है, ये भी सेमीसर्कुलर पार्ट है, जो कि लेफ्ट एंड राइट एंड्स हैं, और ये एक रेसिंग ट्रैक को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ बोला है the distance between the two inner parallel line segment is 60 मीटर.
ये जो इनर लाइन से पैरेलल इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 60 मीटर का दिया हुआ है, मतलब ये वाला लेंथ 60 मीटर दिया हुआ है। अब देख सकते हैं ये जो है इस सेमी सर्कल का डायामीटर भी है 60 मीटर। उसके बाद एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, ये जो पैरेलल लेंथ है इसके ट्रैक के, ये सभी के सभी 106 मीटर लॉन्ग दिए हुए हैं। और बोला गया इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की विड्थ 10 मीटर है, सब जगह 10, ये ऐसा पूरा 10 है, यहां ऐसा लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज मतलब ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस निकालने को बोला गया है। और सेकंड पार्ट बोला गया है एरिया ऑफ द ट्रैक, ये वाला पार्ट, इस ट्रैक का अपने को एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स अपन अगर फर्स्ट क्वेश्चन में जाएं या फर्स्ट पार्ट में जाएं जिसमें हमको डिस्टेंस अलोंग द इनर एज निकालना है, ये वाला, तो आप देख रहे हो जो इनर एज है इसमें ये वाला पार्ट जो है वो एक सेमी सर्कल है और ये वाला भी सेमी सर्कल है। अभी तो सेमी सर्कल का अगर लेंथ निकाल लिया जाए, मतलब सर्कमफरेंस निकाल लिया जाए, तो ये पार्ट और ये पार्ट कवर हो जाएगा। और रही बात इन दोनों पार्ट्स की, ये 106 दिया हुआ है और ये भी 106 दिया हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 106 और ये वाला सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस और ये वाला सर्कल का सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये वाला सेमी सर्कल का डायामीटर दिया है 60 मीटर, तो उसको स्मॉल डी लिखते हैं, इनर सेमी सर्कल होने की वजह से 60 मीटर, तो उसका जो रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर वो हो जाएगा 30 मीटर। अब हमको ये जो रेडियस है मालूम पड़ गया, ये 30 है। अगर मैं बाहर वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकालना चाहूं तो उसको हम ले सकते हैं कैपिटल आर, वो हो जाएगा 30 और ये 10, 30 प्लस 10 दिस इज 40 मीटर। ये निकाल लिया गया है क्योंकि सेकेंड पार्ट में इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी। अब अगर लेंथ ऑफ ट्रैक along the inner edge निकालना पड़े तो हम यहां पर इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 into circumference of inner semicircle, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल दोनों इक्वल है, तो इसके सर्कमफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और ये 106 और ये 106 है, दैट इज प्लस 2 into 106। अब इसको फाइंड करने का तरीका, सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी बाई 2, तो ये 2 कट जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 212। यहाँ आप पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, अगर डी का वैल्यू दिया है 60, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 188.4 प्लस 202, दैट कम्स एज 400.4 मीटर अप्रॉक्स। सो द लेंथ ऑफ द ट्रैक अलोंग द इनर एज इज 400.4 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ ट्रैक को यदि आप देखें तो इसे दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो है कि पूरे बाहर के एरिया से भीतर के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्रैक मिल जाएगा, लेकिन एक बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। इस मेथड को हम अवॉइड करके सिंपल मेथड में चलेंगे। वो सिंपल मेथड क्या है, आप देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं जिसका लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10। इसको हमने मार्क कर लिया है पार्ट 1। ट्रैक के इस पार्ट को जो कि 1 के बराबर होगा उसको मार्क कर लिया 2, और ये वाला जो पार्ट है सेमी सर्कुलर पार्ट, इसको मार्क कर लेते हैं 3, और ये वाले पार्ट को मार्क कर लेते हैं 4। अब आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 का एरिया पार्ट 2 के एरिया से इक्वल होगा और पार्ट 3 का एरिया पार्ट 4 के एरिया से इक्वल होगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है तो पार्ट 1 के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 साथ में आ जाएगा, और पार्ट 3 के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का
फिगर 4 साथ में आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो अपने को एरिया ऑफ ट्रैक मिल जाएगा। जहां तक एरिया ऑफ पार्ट 1 का सवाल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। 2 का भी वही आएगा। 3 का एरिया निकालना है तो बाहर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो अपने को एरिया ऑफ पार्ट 3 मिल जाएगा, और पार्ट 3 का जो एरिया आएगा वो पार्ट 4 का एरिया भी होगा। ये समझने के बाद हम लोग इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को you can say that area of part 1 is equal to area of part 2 and area of part 3 is equal to area of part 4. Therefore, area of the track is 2 into area of 1 plus 2 into area of 3. इस तरह से हम अगर अप्लाई करें फॉर्मूला तो हमारा काम हो जाएगा। अब 2 into area of 1, area of 1 को आप देखें तो 1 एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 106 है और ब्रेथ 10 है, तो ये हो जाएगा 2 into 106 into 2, और ये हो जाएगा 2 into area of 3। एरिया ऑफ 3 को आप अगर देखें तो ये है आउटर सेमी सर्कल का एरिया माइनस इनर सेमी सर्कल का एरिया। आउटर सेमी सर्कल के लिए रेडियस लेंगे कैपिटल आर, इनर के लिए लेंगे स्मॉल आर, दोनों की वैल्यू अपने को पता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2। अब अगर हम इनके वैल्यूज को पुट करें, कॉमन लें तो हमको कुछ मिलेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 into this is 212 प्लस यहाँ पर हम पाई बाई 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कट जाता है, दिस वी कैन दिस आई थिंक इज दिस इज 424 प्लस यहाँ पर 22/7 इंटू यहाँ पर आप देखेंगे तो इट कम्स एज 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पर 10 आएगा, लेंथ 106 है, ब्रेथ 10 है, सो दिस कम्स एज 2120. Now this comes as 2120 plus 22/7 into, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 700, 600 minus 900 will give you 700, ये 100 से कैंसिल होगा तो इसको ऐड करेंगे तो it comes as 4320 meters square. So the area of the track is 4320 meters square. Let's take question number 24 now. In this question is given in figure, as you can see, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 10 cm. Triangle ABC is circumscribing a circle whose radius is 10 cm. Here radius is equal to 10 cm. Now, such that the segments BP and PC into which BC is divided, BP and PC into which BC is divided by this point P are given as, here we can see 15 and 20 cm. This is 15, this is 20 cm. Now, if the area of the triangle is given as 525, the whole triangle's area is given as 525 cm square, we need to find the length of AB and AC. Now, students, if I go into the dynamics of this question, I am writing here BP is given as 15 and PC is given as 20. Now you know that the tangents drawn to a circle from external point are equal. So BP and BR, they will be equal. 15, this will also be 15 centimeter. Similarly, this 20, this will also be 20 centimeter. And similarly, AR and AQ will also be equal, and that we can take as X centimeter. So we'll write this first in the solution part. I can say that tangents drawn from an external point, obviously to a circle, are equal. In short, we can mention this way. We can say
that BP is equal to BR is equal to 15 centimeter. Then CP is equal to CQ is equal to 20 centimeter, and then AR is equal to AQ is equal to, I have taken as X centimeter. So we can like say or suppose or like whatever. So now if I need to find AB and AC, AB you can see its parts are X and 15. So AB is X plus 15 and AC is X plus 20. So if I want to find AB and AC, the first thing I must do is to find a method to find the value of X. Now how to find the value of X? Well, here you can see an additional information is given to us. The area of triangle is given as 525 centimeters square. Now, if I look into one more thing, here OP is the radius and this is the tangent. So this is perpendicular by using the property that the radius is perpendicular to a tangent at point of contact. So students, we can see that triangle BOC is a triangle which has an altitude which is equal to the radius, and the radius is given as 10, and the base is BC. So area of triangle BOC can be found out by using the formula half into base into height. Base is 20 plus 15, 35, and height is R, that is what, 10. Similarly, area of AOB is half into, this is the base, this is the height, and area of triangle AOC, this is the base and this is the height. Now if I add the area of these three triangles, I get the area of the whole triangle, which has been given as 525 centimeters square. By using this particular method, we can easily find the value of X. So let's proceed. So I will say first of all that OP is perpendicular to BC, then OQ is perpendicular to AC, and OR is perpendicular to AB, and for all of them the reason will be radius is perpendicular to tangent at the point of contact. So this is written only to enable us to understand that this is the height for this particular triangle. Similarly this and this are also the heights. So now I can say that area of triangle ABC is equal to area of AOB plus area of BOC plus area of AOC. Now, area of triangle ABC is given to us at what? 525. So I am writing 525 over here. Area of AOB is half into base into height. For AOB, base is AB, which is X plus 15, and height is OR, that is 10. So we can write X plus 15 into 10. For BOC, base is 15 plus 20, 35, and the radius is 10. That's the height. So we can write half into 35 into 10, and for area of AOC, we can write half into X plus 20 into 10. Now here we see a variable, that is X, and that variable can be found out by using a system. Now here I can see that half and 10 can be taken common. So what remains? X plus 15 plus 35 plus X plus 20. Here you can see I have taken common half and 10, and here it is 525. So you can cancel 2 5s and 5 can cancel this 1 0 5. So I get 105 is equal to X plus X is 2X, 15 plus 35 plus 25 is 70. So now I need to find the value of X. I transpose 70 over here. I get 105 minus 70 is equal to 2X. Here I get 35 equal to 2X, and I can say therefore X is equal to 35 by 2, that comes as 17.5 centimeter. So I have got the value of X. I was asked to find AB and AC. For AB we know it is X plus 15. So I can say therefore AB is equal to X is 17.5 plus 15, that comes as 32.5 centimeter. I need to find AC also. AC is X plus 20, you can see. So 17.5 plus 20, that comes as 37.5 centimeter. This is the final answer for this question.
I'll take the last question of this paper, question number 31. Now here it says a peacock is sitting on the top of a pillar. Say this is the pillar and here a peacock is sitting. Say I represent it by P, which is 9 meter high. This pillar is 9 meter high. Then from a point 27 meter away from the bottom of the pillar, bottom of the pillar से 27 meter दूर यहाँ, a snake is coming to its hole. Say snake is here S and the hole is H. It is given its hole at the base of the pillar. तो snake का जो hole है वो pillar के base पे है. तो ये पूरा अपने को दिया हुआ है कितना 27 मीटर. तो अब तक का क्वेश्चन कैसा है? यहाँ एक पिकॉक है और यहाँ एक स्नेक है और स्नेक होल की तरफ आ रहा है. ओके, अब आगे क्या बोला है? Seeing the snake, the peacock pounces on it. You know, peacock is actually a predator और snakes पर feed करते हैं. तो snake को जैसे ही उसने देखा उसने jump करना शुरू किया, bounce करना शुरू किया, उस पर झपटा मारा. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? तो क्वेश्चन है कि इसकी और इसकी दोनों की स्पीड सेम है तो स्नेक को पीकॉक किस पोजीशन पे पकड़ता है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है जहां पर से सी लिखा, सी फॉर कॉट. पीकॉक उसको पकड़ ले रहा है. तो पीकॉक का जो ट्रेजेक्टरी होगा, पीकॉक का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा. नाउ हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो x मीटर है जहां पर स्नेक ने पीकॉक ने स्नेक को पकड़ा और वो होल से x मीटर दूर है. अगर ये x मीटर दूर है तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये पूरा 27 है, ये x है तो ये हो जाएगा 27 माइनस x मीटर. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन. इफ द स्पीड्स आर इक्वल, स्नेक और पीकॉक की स्पीड इक्वल है. स्नेक और पीकॉक ने एक समय चलना शुरू किया, यहाँ पीकॉक है यहाँ स्नेक है, एक समय चलना शुरू किया, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों ने एक ही टाइम से चलना शुरू किया. इसका मतलब दोनों का टाइम टेकन भी सेम होगा और टाइम और स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, बिकॉज यू नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस traveled by the snake should be equal to the distance traveled by the peacock. इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि दोनों का स्पीड सेम है और दोनों एक समय मूव कर रहे हैं. अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय स्नेक अगर आप इस फिगर में देखें तो वो होगा S से लेकर के C तक, मतलब SC is equal to distance traveled by the peacock यानी कि PC. तो SC will be equal to PC. अब अगर ये 27 minus x है तो ये भी कितना हो जाएगा 27 minus x. So therefore PC becomes 27 minus x. अब आप अगर इसे 27 minus x लिख लेते हैं जो कि है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है और क्योंकि ये पिलर है तो यहाँ पर एंगल 90 होना चाहिए. इस ट्रायंगल के तीन साइड्स आपको इन टर्म्स ऑफ x पता है और ये 9 है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो नाउ आई कैन से दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम I can say that 27 minus x का whole square is equal to 9 square plus x square. इसे कैलकुलेट करेंगे ये a minus b whole square के फॉर्म में. a square माने 27 square जो आता है 729 minus 2ab तो करेंगे तो 54x आएगा plus b square is x square. This is 81 plus x square. x square कैंसिल हो जाता है, 54x को वहां ले जाओ, 81 को यहाँ लाओ, तो 729 minus 81 is 54x. इसको माइनस करेंगे, 9 minus 1 is 8, 12 minus 8 is 4 and this is 6. Divide by 54 will give you the value of x. अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. हम कैंसिल करेंगे तो हमको ये 4 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. 4 into 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटता है. 2 into 27
2 into 3, 2 into 2, 2 into 4. अब ये 3 से कट रहा है 3 9 जा 3 1 जा 0 3 8 जा 24 फिर ये कट रहा है 9 से 9 1 जा 9 2 जा इसका मतलब है x इक्वल टू 12 मीटर तो ये जो डिस्टेंस है ये x था और x कितना आया 12 मीटर so I can say that the snake is caught at a distance of 12 meter from its hook.